पीके स्टडी आईक्यू क्लासेस को आपको बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ मु तो पे आज आम देखा गोटे हाइकोर्ट एएसओ मेन्स किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन उपर आज आम डिस्कसन करवा तो प्रीवियस क्लासेस आम किसी डिस्कसन करते तो आज किसी क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा ओके। तो जो मैंने भी प्रीवियस क्लासेस गुड़ाक आप अटेंड करना तो से क्लास गुड़ाक आपंकर अच्छी बोथ आप्रे आउ यूट्यूब आपंकर अच्छी जो मैंने भी अटेंड करना से गुड़ाक क्लास देखूँ जहाद्वारा आपन को क्लासेस गुड़ाक बेनिफिटेड हम ओके। ता बिफोर जो मैंने भी पीडीएफ मुझे आपको पठेदेवी है आप पीडीएफ आसो बुझे ना नहीं जी क्लासेस पीडीएफ हो बाकी जोटार पठाइनी कि पठाइनी से गुड़ाक मुझे आपको प्रोवाइडेड हम बुझे। तो देखा आज कौन रही है सब क्वेश्चन गुड़ाक आम डिटेल डिस्कसन करवा तो चलते स्टार्ट करवा आज क्लास। देखो फास्ट क्वेश्चन अच्छी अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 which state in India has the highest female literacy rate। जदि हम देखा सेंसस 2011 अनुसार हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट को स्टेट रे आसीबो आंसर दे दी जिवे हला हो परिबो आंसर आसीबो कोन दैट इज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट आसीबो केरल बुझिला जोटा कि टोटल 92.07% होउछन कोन फीमेल लिटरेसी रेट है जो थी कि केरल माने लिटरेसी रेट होची केते अप्रोक्सीमेटली 94% बुझिला किंतु ताहिर हम देखिबा फीमेल होची केते 92.07% बुझिला। नेक्स्ट देखो सेकंड नंबर देजी हु ऑफ दिल्ली सल्तनस परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन हु ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स परस्यूड ऑफ द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन जदि हम देखिबा ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को दिल्ली सल्तनत बा को दिल्ली सुल्तान माने पॉलिसी थिला ब्लड एंड आयरन कौन आसीबो आंसर कौन हो परिबो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी आंसर आसीबो कौन दैट इज बलबन ओके जियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट देखो आठ नंबर देसी द ग्रांड ट्रंक रोड वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच रूलर जदि हम देखिबा ग्रांड ट्रंक रोड का समय आसला को रूलर समय आसला ग्रांड ट्रंक रोड कौन आसो जदि मेंशन करें भल ग्रांड ट्रंक रोड क्या समय आसो कौ रूलर समय आसो क्या रिजन आसो ग्रांड ट्रंक रोड आंसर आसो कौन ना शेरशाह सूरी बा सूरी डायनेस्टी समय शेरशाह सूरी समय आसो कौन दैट इज द ग्रांड ट्रंक रोड ओके मन रख मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख on which continent can you find the Amazon rainforest the world's largest tropical rainforest देख पिले ये क्वेश्चन माने ये क्वेश्चन रे दीटा आपनर अछि गोटे होची कोन Amazon rainforest कि गोटे वर्ल्ड्स रो लार्जेस्ट की प्रकार फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बुझिला ना नहीं ये को कॉन्टिनेंट रे आसीबो on which continent can you find the Amazon rainforest the world's largest tropical rainforest कौन हो परिबो कौन हम रेन फॉरेस्ट कौट आसो दैट इज साउथ अमेरिका मन रख साउथ अमेरिका। नेक्स्ट देख द फेमस सेरेंगेटी नेशनल पार्क द फेमस सेरेंगेटी नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स एनुअल वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन इज लोकेटेड इन व्हिच कॉन्टिनेंट सेरेंगेटी नेशनल पार्क कौट आसो कॉन्टिनेंट पचार आसो दैट इज सेरेंगेटी नेशनल पार्क बोले यार कॉन्टिनेंट कौन आसो दैट इज अफ्रिका कॉन्टिनेंट यार
लोकेशन आसीबो मन रखिबो आफ्रिका हिजिबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द टाइप ऑफ रॉक formed by the cooling and solidification of magma or lava is called। पचाची द टाइप ऑफ रॉक formed by the cooling and solidification of magma or lava is called। तो এই प्रकार रॉक आम को प्रकार रॉक कहबा जोटा कि कोन सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग ऑफ magma और लाभा द्वारा हुए। नेम द रॉक कहि परिबो। आंसर आसीबो कोन दैट इज इंजीनियस रॉक। इंजीनियस रॉक। नेक्स्ट देखो 7 नंबर देइछि कोन व्हिच ओशन इज सराउंडेड बाय थ्री कॉन्टिनेंट्स एशिया यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। नेम द ओशन दैट इज सराउंडेड बाय थ्री कॉन्टिनेंट्स एशिया यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो माने इंजीनियस रॉक कहउछन्ती करेक्ट अछि कोन आसीबो। कोन आसीबो आंसर। आंसर आसीबो कोन दैट इज इंडियन ओशन आसीबो। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो 8 नंबर देइछि व्हिच कनेक्ट्स इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। तो देखिबा हमें इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन दीटा कोन लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ला ना नहीं तो याको को स्ट्रेट कनेक्ट करे बोली आपन पचारछि। फोर स्ट्रेट रिलेटेड आसीबो दैट इज इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। हबो आसीबो कोन ना स्ट्रेट ऑफ मालाक्का ହେଲା स्ट्रेट ऑफ मालाक्का मन रखिबो करेक्ट आंसर एम एल एम ए एल एस सी सी ए हैला स्ट्रेट ऑफ मालाक्का। नेक्स्ट देखो द पर्शियन गल्फ इज लोकेटेड बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज। एटे मेनली इंपोर्टेंट दीटा कंट्री आप मेंशन करेंगे। द पर्शियन गल्फ इज लोकेटेड बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज आसीबो। पर्शियन गल्फ आसीबो दीटा कंट्री आपन गोटे कहबार अछि कोन कोन आसीबो दीटा कंट्री। आंसर आसीबो कोन ईरान एंड इराक। नेक्स्ट देखो द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड इज बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज। जदि हम देखिबा दीटा कंट्री आसीबो जार कोन इंटरनेशनल बॉर्डर सब लॉन्गेस्ट द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड इज बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज। देखो जो माने भी मोटे दीटा कंट्री कहिছে माने कोन क्वाति लिखले अबे हबो ला सऊदी अरेबिया भी आसीबो। हमें देखिबा दीटा कंट्री जोडा कि कोन इंपोर्टेंट नबा तो ईरान एंड इराक आसीबो। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर आपण कोन कहि परिबे को दीटा कंट्री सहित आसीबो। आंसर आसीबो कोन दैट इज कनाडा एंड यूएसए। कनाडा एंड यूएसए। नेक्स्ट देखो द नागरहोल नेशनल पार्क ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। नागरहोल नेशनल पार्क कोड आसीबो जोटा कि कोन गोटे बायोडाइवर्सिटी कहबा कोड आसीबो स्टेट कोन हिजिबो। आंसर आसीबो कोन ना कर्नाटक। नेक्स्ट देखो
देखो 12 नंबर देछि व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज द डेक्कन प्लेटू इन इंडिया हैव। जदि हम देखिबा डेक्कन प्लेटू रे को प्रकार क्लाइमेट देखा जाए, को प्रकार क्लाइमेट देखा जाए, दैट इज डेक्कन प्लेटू रे को प्रकार क्लाइमेट आपणकर अछि। कोन आसीबो व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट डज द डेक्कन प्लेटू इंडिया हैव। आंसर आसीबो कोन, दैट इज द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। नेक्स्ट देखो द गल्फ ऑफ कम्बाट लोकेटेड ऑन व्हिच कोस्ट ऑफ इंडिया। The Gulf of Combat is located on which coast of India? Coast coast रे आसीबा आपनर ए तो आसीबो कोन ना वेस्टर्न कोस्ट बा वेस्ट साइड रे आसीबो ये हला। वेस्टर्न कोस्ट जोटा कि गुजरात ना नहीं कच ए गुडा करे आपण गल्फ ऑफ कम्बाट। ओके दोकान देइछन भी वेस्टर्न साइड करेक्ट अछि। नेक्स्ट देखो द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बा डीवीसी responsible for the production of hydroelectric power and irrigation is located in which state of India? डीवीसी आसीबो कोन गोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड इरिगेशन को स्टेट सहित ये रिलेटेड आसीबो बा को स्टेट्स सहित रिलेटेड आसीबो। कोन आसीबो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बा डीवीसी। आंसर आसीबो कोन दैट इज झारखंड एंड वेस्ट बंगाल हला। तीटा स्टेट आसीबो एठे मन रखिबो। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुप 17 इन द पीरियोडिक टेबल। जदि हम देखिबा पीरियोडिक टेबल रे तो 17 कथा हम कोन बुझिबा बा ग्रुप 17 को कोन कहा जाय। व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुप 17 इन द पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप 17 कोन आसीबो क्लोरीन फ्लोरीन एगुडा आसीबो ग्रुप 17 रे। ये आसीबो कोन हेलोजेंस आसीबो हला। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो 16 देइछि कोन इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इज ए थ्योरी प्रपोज्ड बाय व्हिच साइंटिस्ट। ठीक अछि क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन। नेक्स्ट देखो देइछि कोन इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इज ए थ्योरी प्रपोज्ड बाय व्हिच साइंटिस्ट। को साइंटिस्ट या सहित रिलेटेड हेबे। आसीबो इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। आंसर आसीबो कोन दैट इज चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट देखो नेम द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बॉडीज स्लीप वेक साइकिल। नेम द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बॉडीज स्लीप वेक साइकिल। कौन आसीबो माने या सहित को हार्मोन आसीबो। आंसर आसीबो कोन दैट इज मेलाटोनिन। बुझिला। नेक्स्ट देखो हु इन्वेंटेड टेलीग्राफ। हु इन्वेंटेड द टेलीग्राफ। कौन आसीबो हु इन्वेंटेड द टेलीग्राफ। आंसर आसीबो कोन ना सैमुअल मोर्सी। टेलीग्राफ सहित रिलेटेड आसबे। नेक्स्ट देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
Was the provision for reservation of scheduled caste in the Lok Sabha made? Which article of the Indian Constitution the provision for reservation of scheduled caste in the Lok Sabha made? कौन आसीबो आर्टिकल कौन आसीबो प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा या फिर आर्टिकल कौन आसीबो आर्टिकल आसीबो 330 नेक्स्ट देखो देखो 20 देइछि कोन नेम द ऑथर ऑफ द बुक डेविड कॉपरफील्ड नेम द ऑथर ऑफ द बुक डेविड कॉपरफील्ड रिजर्वेशन कथा कहिछि हला लैंग्वेज कथा कहनी रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द आंसर आसीबो कोन दैट इज चार्ल्स डिकेंस नेक्स्ट देखो देखो 21 देइछि कोन which state is known as the granary of India which state is known as the granary of India कोन आसीबो ग्रानारी ऑफ इंडिया आंसर आसीबो कोन दैट इज पंजाब नेक्स्ट देखो हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज इन हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा कोन आसीबो हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज इन हाई कोर्ट ऑफ देखो ये न बार कारण कोन ना पंजाब रे आउटपुट हाई हला माने अधिक आउटपुट अधिक होय बुझिला ना नहीं जोडे कि कोन सेटे जोडे कि इनपुट जति दिया जाए आउटपुट अधिक होय तो पंजाब ही कह जाए कोन ग्रानारी ऑफ इंडिया आंसर आसीबो कोन एटा अमया कुमारी पाढ़ी सॉरी हाँ अमया कुमारी पाढ़ी नेक्स्ट देखो ऑन व्हिच डेट सद्भावन दिवस सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट सद्भावन दिवस सेलिब्रेटेड तो सद्भावन दिवस केबे आसीबो तो सद्भावन दिवस आसीबो केबे आसीबो ये 20th अगस्त हला 20th अगस्त नेक्स्ट देखो which lake was designated as the first Indian wetland of international importance under Ramsar convention फास्ट लेक जोटा कौन कराइला ना फास्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन माने फास्ट लेक कोड आसो जोटा कि रामसर वेटलैंड अनुसार जीव आंसर आसो कौन दैट इज चिलिका नेक्स्ट देखो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रणय वल्लरी हु द ऑथर ऑफ द बुक प्रणय वल्लरी कौन आसो प्रणय वल्लरी ऑथर किए जी भलसे मन पक प्रणय वल्लर ऑथर किए जी गंगाधर मेहर है
ଦେଖିବ ଏଟେ କ'ଣ ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଇଛି ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରମା ଡେ ଅବଜର୍ଭଡ। ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରମା ଡେ ଅବଜର୍ଭଡ। କେବେ ଆସିବ? आंसर आसो कहे ना 17 अक्टोबर। नेक्स्ट देखो देखो 27 देछि कोन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर ए रिपोर्ट रिलीज्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन। यदि हम देखिबा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर ए रिपोर्ट रिलीज्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन। तो को इंस्टीट्यूशन द्वारा आसीबो कोन दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर। मन रखिबो आंसर आसीबो कोन विफो सेम ऑर्गेनाइजेशन। एटा खाली आसीबो कोन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हला वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही रिलीज हुए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट हला इंडिकेटर रिपोर्ट। नेक्स्ट देखो बिटवीन हुम एंड इन व्हिच ईयर द बैटल ऑफ हल्दीघाट वाज फाउट। कोन आसीबो बैटल ऑफ हल्दीघाट केबे आसीबो? देखो बैटल ऑफ हल्दीघाट जदि आपण पढिसंदी इजीली हो जिवो कोन हे परिबो बैटल ऑफ हल्दीघाट आसीबो 1576 रे आसीबो। कहा कहा भितर ना महाराणा प्रताप एंड मुगल फोर्स है मुगल फोर्स जोटा कि मुगल फोर्स के लीड करते ना राजा मानसिंह। राजा मानसिंह जदि आप खाली भी महाराणा प्रताप एंड मुगल मुगल फोर्स लिखुं असुविधा नहीं है करेक्ट हम। नेक्स्ट देख प्रोविजन एस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स मेंशन्ड इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं खाली शेड्यूल ऑफ अच्छे कौन प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स मेंशन इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो या को शेड्यूल आसीबो? आसीबो आंसर आसीबो कोन ना दैट इज फिफ्थ शेड्यूल है फिफ्थ शेड्यूल मन रखियो लिखिबो फिफ्थ शेड्यूल बोली। नेक्स्ट देखो अंडर द व्हिच लिस्ट ऑफ द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सब्जेक्ट एजुकेशन लिस्टेड। जदि हम देखिबा सेवेंथ शेड्यूल आपनर कोन तीनटा लिस्ट आसीबो तो एजुकेशन ए भीतर को लिस्ट रे जी कोन आसीबो एजुकेशन को लिस्ट रे आपनर आसीबो? एजुकेशन आसीबो कोन दैट इज कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट देखो देखो 31 देखिए हु फाउंडेड द सत्यवादी स्कूल विथ नेशनलिस्ट स्पिरिट इन ओडिशा। हु फाउंडेड द सत्यवादी स्कूल विथ नेशनलिस्ट स्पिरिट इन ओडिशा। कौन आसो दैट इज पंडित गोपबंधु दास। गोपबंधु दास पंडित गोपबंधु दास। नेक्स्ट देखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगानीज इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगानीज। स्टेट कौन आसीबो? मैंगानीज हाँ मना करनी ओडिशा भी अच्छी लिस्ट रे किंतु हाईएस्ट परिमाण किए आसीबो?
आंसर आसीबो कोन दैट इज मध्य प्रदेश है अधिक क्वांटिटी आसीबो कोडे मध्य प्रदेश रे आसीबो नेक्स्ट देखो सेंट्रल विजिलेंस कमिशन वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी कोन आसीबो सेंट्रल विजिलेंस कमिशन वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी को कमिटी सहित रिलेटेड हबो कोन ना सीवीसी दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमिशन आंसर आसीबो कोन दैट इज सांथानामा कमिटी सांथानामा कमिटी नेक्स्ट देखो व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड for the setting of administrative tribunals in India, which constitutional amendment provided for the setting of administrative tribunals ये को सीएए अनुसार आसिला आंसर आसीबो कोन दैट इज 42nd सीएए अनुसार आसीबो 1976 ओके राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच हर्पन साइट कोन आसीबो राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच हर्पन साइट आंसर आसीबो कोन दैट इज लोथाल नेक्स्ट देखो which Vijayanagar ruler was known as Andhra Bhoj which Vijayanagar ruler was known as Andhra Bhoj कोन आसीबो आंसर आसीबो कोन दैट इज कृष्णा देवराय कृष्णा देवराय नेक्स्ट देखो नेम द लार्जेस्ट इनर प्लांट ऑफ सोलर सिस्टम नेम द लार्जेस्ट इनर planet of the solar system sorry inner planet of the solar system आंसर आसीबो कोन अर्थ नेक्स्ट देखो warm dry winds blowing down the east slopes of Rockies are known as Rockies कोन गोटे माउंटेन warm dry winds blowing down the east slopes of Rockies mountain are known as कोन आसीबो ब्लू होती इंडिया रे हला हिला ना नहीं देखो इज warm and dry winds मेंशन कर दीजिए कोन दैट इज Rockies mountain भी मेंशन आंसर आसीबो कोन दैट इज चिनोक दैट का कुहा जाय कोन स्नो ईटर बोली कुहा जाय नेक्स्ट देखो ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर इज न्यूयॉर्क सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर इज द न्यूयॉर्क सिचुएटेड रिवर कोन आसीबो आंसर आसीबो कोन दैट इज हडसन रिवर हडसन रिवर नेक्स्ट देखो द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज ऑफ व्हिच रिवर और जदि हम देखिबा सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन
कौन आसिबो भारतर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन आसिबो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन जो माने कहउछन गोदावरी ठीक अछि ହେଲା गोदावरी रिवर गोदावरी रिवर बेसिन नेक्स्ट देखो 41 ଦେଇଛି in which year महात्मा गांधी visited ओडिशा in which year महात्मा गांधी visited ओडिशा से केबे से आस्थिले आंसर आसीबो कोन मार्च 23 1921 रे ठीक अछि 1920 ठीक अछि नेक्स्ट देखो 42 ଦେଇଛି during cell division DNA synthesis takes place in which phase ଯଦି हम देखिबा सेल डिवीजन को डीएनए सिंथेसिस को फेज रे हुए आंसर आसीबो कोन इंटरफेज आसीबो नेक्स्ट देखो which article of the constitution of India states that no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund which article of the constitution of India states that no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of the state fund 27 आर्टिकल कौन आसीबा पई आर्टिकल आसीबो 28 28 जो मान ठीक अछि नेक्स्ट देखो हु वाज द फर्स्ट ओडिया टू बिकम ए मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस हाँ ठीक अछि 28 ठीक अछि हु वाज द फर्स्ट ओडिया टू बिकम ए मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज आंसर आसीबो कोन दैट इज सतीन्द्रनाथ महांती मन रखिबो सतीन्द्रनाथ महांती नेक्स्ट देखो हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ भोई डायनेस्टी हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ भोई डायनेस्टी बा फाउंडर ऑफ भोई डायनेस्टी आंसर आसीबो कोन दैट इज गोविंद विद्याधर नेक्स्ट देखो इरम which is otherwise known as रक्त तीर्थ of Odisha is in which district इरम which is otherwise known as रक्त तीर्थ of Odisha is in which district को लोकेशन आसीबो को रे तो आसीबो कोडे ना भद्रक रे आसीबार नेक्स्ट देखो द फर्स्ट एंड द ओनली ओडिया टू बिकम द स्पीकर ऑफ लोकसभा वर्तमान के कोड जिल्ला रे अछि
First and the only Odia to become the Speaker of Lok Sabha. Answer ଆସିବ କ'ଣ? That is Ravi Ray. Next ଦେଖ, who is the first woman judge in the High Court of Odisha? ଆସିବ କ'ଣ ଆସିବ? Answer ଆସିବ କ'ଣ? That is ଅମୟା କୁମାରୀ ପାଢ଼ୀ. ହେଲା। Next ଦେଖ, a pond of water appears less deep due to which phenomenon of light? A pond of water appears less deep due to which phenomenon of light? ଆସିବ answer? Answer ଆସିବ କ'ଣ? That is refraction. Refraction of light. Next ଦେଖ, last କହିଛି, the term antibiotic was coined by. Term antibiotic was coined by. କ'ଣ ଆସିବ? Antibiotic କ'ଣ ଆସିବ? Answer ଆସିବ କ'ଣ? Selman Waxman. ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଓକେ, ଆପଣ ଯେତିକି ବି କ୍ଲାସେସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ରିଭାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ଲାସେସ୍ ହେଇନି ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସେସ୍ କରିଦେବି। ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।